Hello students, myself Sudhir back again with today's SSC classes. So as we all know that we are discussing MCQ questions from last various classes. So today will be also the same like the ones before. So today we will be discussing some questions related with the lesson 4 of geography, that is agriculture. And why this chapter is important, chapter तो पढ़ना नहीं लेकिन why this chapter is important, because our country is such a country where agriculture has been practiced from the various ancient times, and today also it's a backbone of our country. Yes. So now let's move towards the question. So let's start with the first question, that is, which of the following is not correct about plantation farming? इन चार दिए गए में से ऑप्शन में सबसे गलत कौन सा ऑप्शन है जो प्लांटेशन फार्मिंग के साथ रिलेटेड नहीं है? सो नंबर 1 ऑप्शन, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल. ये सही है, एकदम एक्यूरेट है. नेक्स्ट, द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. Plantation covers large tracts of land called states. Farmers clear a patch of land by felling trees and burning them to produce cereals and other food crops. Which one is wrong option, or which one doesn't match with plantation farming? ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट नहीं है प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में? ओके शुभम. Okay, very good. Farmers clear a patch of land by felling trees. So this is a part of slash and burn. No. So this will be the correct answer. Correct answer, जो कि plantation farming से match नहीं करता है. So next question you all can see. Which of the following are plantation crops? Okay, tea, coffee, banana and sugarcane. So this kind of plantation farming requires like one crop, and that single crop will give its yield for many years. So like food crops and all needs to be changed in certain season. Every season हम लोग को grow करना है, harvest करना है. But plantation, it's also a seasonal crop, sugarcane. Is that clear? But it's a plantation. Next, so 3 major cropping seasons of India are okay. Come, Muskan. ओके, रबी, खरीफ एंड जायद. ये 3 सीजन का नाम है, किसी इंसान का नाम नहीं है. रबी, खरीफ और जायद. ओके, इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री आर. इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट. Very good. Okay, the two main wheat growing regions are okay, Aman. It is wrong.
Okay, very good. The Ganga Satluj basin and the Deccan Trap. Very good, Abhinav. Now next. Wheat requires annual rainfall between. Okay, Satyam. (50 and 75 centimeter of rainfall). Okay, it requires less rainfall than rice. Or you can say paddy. Largest producer of bajra. Okay, Mohit. Okay, very good. Rajasthan is the largest producer of bajra. Which is the right condition for the growth of maize? Right condition for the growth of maize. Okay, Udit. Udit Nath, please. Is it correct? Yes. The temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees and old alluvial soil. Very good. Which one of the following is not true for pulses? इनमें से कौन सा ऑप्शन पल्सेस के साथ या पल्सेस फार्मिंग के साथ मैच नहीं करेगा? Now girls, anyone? Anyone? Okay, come. Don't get confused, you. Wrong. Okay, Satyaprakash. Very good. Pulses require intensive irrigation facilities. Pulses doesn't require that much irrigation facilities like other crops requires. Okay? So this will be your correct answer. D. The percentage of our cropped area is covered by oil seeds. What percentage of our cropped area is covered by oil seeds? Okay, Rohit. Okay, 12%. Very good. Which of the following condition can spoil tree crop? Satyam? Anyone? Which condition out here? Arif? Come. Wrong answer. Satyam? Very good. Clay soil which has high water holding capacity. Coffee cultivation was first introduced in. Okay, Ria. Finally, some girls are raising their hands. That's why.
Is it? Okay, Daniel. Coffee cultivation was first introduced in confirm. Okay, good. Baba Budan Hills. Srishti. Rearing of silkworms, okay. Rearing of silkworms, okay. Sericulture, good. I think you have been learning this from various small classes. Which one of the following is announced by the government in support of a crop? Prasun. Okay, Aman Sharma. Very good. Minimum support price, MSP. So MSP ने सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको किया है बताओ? Which state? I mean, मतलब disadvantage of MSP. So it is affecting the areas like Punjab because MSP gives, like when government has to sell PDS and all, they require wheat and rice. They give MSP, other provisions like fertilizers and all. तो इससे पंजाब जैसे एरिया क्या कर रहे हैं आज के दिन में, ज्यादा व्हीट एंड पैडी वगैरह पे ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहा है. उसके चलते अदर क्रॉप्स को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है. जिसे बोथ देयर आर वेरियस क्रॉप्स दैट हैज यू कैन से इकोनॉमिकल वैल्यू अच्छा होता है उसका, तो वैसे क्रॉप्स को छोड़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि भाई ये क्रॉप्स उगेगा तो भाई गवर्नमेंट खरीदेगा ही. तो गवर्नमेंट को बेचने के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं. सो शुभम, over these years cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of, किसके आधार पे खेती में यू कैन से कल्टीवेशन में बहुत बदलाव आया है. Very good technical know-how because there have been various technologies, new technologies. What has been the main dependency of primitive farming, sorry. Okay, you can see the options. What has been the main dependency of primitive farming? Primitive farming किसके ऊपर अभी तक ज्यादा निर्भर है? Okay, बिट नहीं, सोनू. A, monsoon, very good. Because primitive means they don't have modern technologies, yes. So they don't have proper irrigation and all. So that's why their crops are most dependent on monsoon. If there is good monsoon, then their crops is good. If there is bad monsoon, late monsoon, it may affect their crops. So mostly the farmers which practice primitive farmings are dependent on monsoon. Now next question. Why is there enormous pressure on agricultural land? Due to the law of inheritance and division of land. Inheritance मतलब you can say मेरे बाद जमीन कौन लेगा? Enormous बहुत ज्यादा. Inheritance मतलब बाप के बेटा, बेटा के बेटा. ये overpopulation, small scale farmers are not able to earn livelihood.
Farmers of less land holdings are not able to afford the right techniques. You want to come? Okay, Satyam. Rajbir, where are you? No, that is wrong. No. I'll explain it. Okay. No. Anyone? Sarma? Not overpopulation. Due to the law of inheritance and division of land. Why? Because land has been not divided properly. Some are holding huge amount of land, some are holding very less, और किसी के पास है भी नहीं. No, overpopulation can be dealt. आज के दिन में overpopulation है, फिर भी हम लोग डिमांड पूरा कर पा रहे. लेकिन अगर लैंड डिवीजन बढ़िया से होगा ना बेटा, इक्वली, तो एवरीवन कैन ग्रो प्रॉपरली. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इन आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर? राजवीर, नो. Rohit, come. Three types, good. Prasun, assertion and reason. India's primary activity is agriculture. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. Excuse me. Okay, both A and R true, and R is the correct explanation of A. इंडियाज प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर सबको पता है, और इंडिया का टोटल पॉपुलेशन मतलब एग्रीकल्चर है तो उसका पॉपुलेशन भी उससे जुड़ा हुआ है, तो सही है. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज नॉट एन ओल्ड इकोनॉमी एक्टिविटी. रीजन, फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. आदित्य, Riya, okay, Mohit, come. No. Okay, come. Agriculture is not an economic activity. Farming varies from subsistence to commercial type. Okay, now late. Actually, yes, D is the right answer. Is that clear? Yes. Because this is wrong. Agriculture is not an old economy. ये बहुत पुराना, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी यही था. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल. यस, वेरी करता है. Sorry Aditya, I just confused you. Plantation has an interface of agriculture and industry.
Reason, plantation is a type of commercial farming. A single crop is grown on a large state or large area. यहाँ पे इंटरफेस या इंटरनल इट कवर्स सम लैंड्स के नहीं मतलब ठीक है, इट कवर्स कुछ एरिया कवर करता है और ये एग्रीकल्चर का एरिया कवर करता है एंड इंडस्ट्री को भी ये रिलेटेड है. तो इसका रीजन क्या है? प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया. ओके पंडित. अर्पित. Okay, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Biochemical inputs and irrigations are used for obtaining higher production. Doses of biochemical inputs are used to grow crops rapidly. Okay, first of all, assertion देखो. Biochemical inputs and irrigation are used to obtain higher production. सही है, सही है. Doses of biochemical inputs are used to grow crops rapidly. ये भी सही है. Both are true. लेकिन अब explanation सही है या गलत है? Okay, रिया कम. मुस्कान after this. गुड. वाई एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे हायर प्रोडक्शन की बात हुआ है और यहाँ पे ग्रो क्रॉप्स रैपिडली, तो एक प्रकार से सेम ही है. वाई हम लोग जल्दी भी चाहते हैं, प्रोडक्शन क्या चाहते हैं? हायर. फॉर एग्जाम्पल वाई वी यूज यूरिया, जल्दी ग्रो करता है ना, मोर प्रोडक्शन एज वेल एज फास्टर ग्रोथ. So now Prasun, I am telling you, you will come next. Daniel, you can come. In 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms, provisions for crops, insurance against drought, flood, cyclone, fire and diseases, establishment of Gramin banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. तो यहां पे हम किस चीज का बात कर रहे हैं? ये पैराग्राफ में हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं? रिसोर्स प्लानिंग का बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का बात कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं? आरिफ come. Wrong. Daniel. Okay, very good. Institutional reforms. How are Gramin banks beneficial for farmers? ग्रामीण बैंक्स किस आधार पे किसानों को मतलब फायदा करता है? अभिषेक, प्रिंस. ग्रामीण बैंक किस आधार पे किसान को बेनिफिशियल है? ग्रामीण बैंक ना यस
ग्रामीण बैंक्स, ओके गुड, ग्रामीण बैंक्स ऑलवेज ऑफर इंटरेस्ट फ्री लोन. ये हो नहीं सकता है कि कोई बैंक बिना इंटरेस्ट का लोन देना ही नहीं करे. हाँ, इतना कर सकता है कि थोड़ा इंटरेस्ट अन्य बैंक से कम इंटरेस्ट ले, तो लो इंटरेस्ट रेट पे वो लोग क्या करता है, लोन देता है किसानों को. Which of these have allowed improvement in quality of Indian agriculture? इन चारों में से किसने थोड़ा इंडियन एग्रीकल्चर को थोड़ा क्वालिटी लाया है? रिशु, प्लीज कम. Okay, weather bulletins and agricultural programs. क्योंकि weathers are very important for agriculture. Yes, if we get time to time weather report, then like farmers will be aware is what is going to happen, what changes. जैसे कि फसल काट लिए, धूप देख के क्या भरोसा कि कल बारिश आ जाए. Yes, मानसून कब आएगा, कब से आने से ये वेदर रिपोर्ट बार बार आएगा, तो किसान क्या रहेंगे, अवेयर रहेंगे, उसके आधार पे वो लोग क्रॉप को भी क्या करेंगे, सो करेंगे. सो और जैसे कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म? Irfan? Okay, agriculture is the backbone of Indian economy. So if we reform the agriculture and if we do better in agriculture, आज के दिन में जो है उसमें और सुधार करेंगे तो हमारे एक तो बैकबोन इंडियन इकोनॉमी का, उसको और बेटरमेंट सुधार होगा. The land reform development program started in okay 1980s. So last but not the least, Muskan. Last but not the least, last question for today. These farmers are provided insurance in case of natural disasters. Is that clear? I hope you all were satisfied with the questions. I hope you liked the questions which I prepared. Okay, lastly, before ending it, if you have any doubt in these questions, related questions. So thank you. We will be coming with the next video in next class. Till then, stay safe, stay healthy.